you have remember कि blastocyst is actually the blastula itself, but when there is a differentiation, okay bete, differentiation of cells, so some of the cells they form the trophoblast layer, ठीक है, कुछ cells जो हैं वो trophoblast layer जो है उसको form कर देते हैं, and some of the cells they later form what, inner cell mass. And I have also explained you what is the function of the inner cell mass, ठीक है. So from the inner cell mass you must remember that 3 embryonic layers they are going to be developed from the inner cell mass. The outermost layer is ectoderm, the middle layer is known as mesoderm, and the innermost layer it is known as endoderm. Okay, now we are proceeding further. तो देखो ये डायग्राम्स जो हैं ये जब भी हमसे पूछा जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, यू कैन गिव दिस डायग्राम, so it is very easy to draw these diagrams. You must know the different parts of the fallopian tube, ठीक है. fallopian tube के जो तीनों parts हैं, you must know that in fundibulum, isthmus, ampulla, ये सारे names जो हैं that should be clear to you. Now I am on page number 53 of your NCERT book, and we are proceeding with the topic pregnancy and embryonic development. So yesterday I have told you about this a little bit, I have discussed with you. तो मैंने आपको बताया था कि chronic villi is formed. So what is this chronic villi? So what happen after implantation? Okay, when the blastocyst it implants itself with the inner wall of the uterus, then what happen? The trophoblast of the blastocyst, ठीक है, blastocyst की जो trophoblast है, it deeply embedded the blastocyst into the uterus cells, and as a result what happened? In this trophoblast some of the finger-like projections they develop, and these finger-like projections they are actually known as chronic villi. Okay students, so this chronic villi, these are surrounded by uterine tissue on one hand, and on the other hand the maternal blood vessels they are also found in this, ठीक है. What is the function of this chronic villi? तो कहते हैं कि because of the formation of these chronic villi, ठीक है, the interdigitation, a tough connection, or you can say a strong connection, it develops between the uterine tissue and the trophoblast layer, because these finger-like projections, which are chronic villi, they interdigitate with the uterus tissue, ठीक है. तो जिस तरह से हमारी ये दो फिंगर्स होती हैं हैंड्स की, इसको हम इस तरह से एक दूसरे में अगर इंटरलॉक कर देते हैं, तो इसी तरह से वो कहते हैं कि the cells of the uterus and this chronic villi they are interdigitated with each other and interlocked with each other, so they are toughly binded with each other. I want to say this. Okay students, now अब वो कहते हैं कि when they both they interdigitate with each other, then they form a bridge-like structure, that is a bridging connection between the fetus as well as the mother, and that is known as placenta. Now placenta it has playing a significant functions here. So these placenta, because it is a connecting link between the fetus and the mother, so this placenta it on the one hand it supplied oxygen as well as nutrients, or you can say food material to the fetus. On the other hand, the excretory products of the fetus as well as the carbon dioxide gas, which is a wastage, they also comes out from the fetus body into the mother body for the purpose of its excretion, ठीक है. तो प्लासेंटा दो रोल प्ले करती है, ऑक्सीजन और फूड मटेरियल जो है उसको फीटस की बॉडी में लेके जाती है या डेवलपिंग एम्ब्रियो की बॉडी में लेके जाती है, एंड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिमूव्ड एज वेल एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है. It also includes the urine as well as the waste products of the fetus, and its removal is done in this way by this placenta. Now yesterday what I have told you that this placenta not only playing these important functions, whereas it itself behave as an endocrine gland also, ठीक है. If it is an endocrine gland, this means it produce variety of hormones that play a necessary role in the process of pregnancy. So you must have to remember the name of these hormones, ठीक है बेटा. ये प्लासेंटा जो है बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, it produces so many hormones. You must know the name of the hormone HCG, that is human chorionic gonadotropins,
Okay, HPL, that is human placental lactogen, and then estrogen, progesterone already there in the blood of the female. And one very important thing is the ovary is also involved. तो प्लासेंटा के अलावा ओवरी जो है it also produces one important hormone during a pregnancy, and that hormone is known as relaxin. ठीक है बेटे, नेम से पता लग रहा है इसका हार्मोन इज relaxin, then it means this hormone, it is involved in the relaxation of the uterine muscles after the delivery of the baby. ठीक है, when the child it comes out from the uterus, then you know that the uterine muscles they contract. So फिर से वो कहते हैं कि uterine muscles जो है वो relax हो सके, उसके लिए ओवरी कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है? इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन relaxin. Okay, student, इसके अलावा in the pregnant women, so some of the important hormones that are seen in the body, so that ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो उसकी बॉडी के अंदर जो है फीमेल में नजर आते हैं. तो कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं? तो मेनी फोल्ड्स ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इज देयर, एंड in addition to these cortisol, prolactin, thyroxine. So all of these hormones they are produced in larger quantity in the maternal blood. ठीक है, why they are produced in larger quantity? तो कहते हैं कि increased production of these hormones they are very much required for the growth of the fetus. ठीक है, बॉडी के अंदर किसकी ग्रोथ हो रही है? फीटस की ग्रोथ हो रही है. तो कहते हैं कि अगर फीटस की ग्रोथ हो रही है बॉडी में, तो ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो फीटस की ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं. And also there are so many metabolic changes that are also occurring in the body of the mother, and they are required for the maintenance of the pregnancy. So that's why all of these hormones they are produced in larger quantity in the blood of the mother. ठीक है, for the proliferation of the fetus body, for its growth and proper maintenance. Okay बेटे, अब देखिए आफ्टर इम्प्लांटेशन. ठीक है, यू नो दैट आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट जो है उसका तो फंक्शन था कि इट डीपली embedded the blastocyst inside the uterine cells. Now what is the function of the inner cell mass? So this inner cell mass which is actually present inside the trophoblast in the form of a cluster of cells, this inner cell mass now undergoes differentiation. ठीक है बेटे, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएंगे. इनर सेल मास जो है उसके जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होने लग जाएंगे, एंड दे अरेंज्ड देमसेल्व्स इन द फॉर्म ऑफ 3 लेयर्स. ठीक है, सम ऑफ द सेल्स दे एडजस्ट देमसेल्व्स एंड द आउटर रीजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट के एकदम साथ में कुछ सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, एंड दे फॉर्म द एक्टोडर्म. देन नेक्स्ट टू द एक्टोडर्म, some of the cells they arrange themselves in the middle portion, and they form the mesoderm, and some of the cells जो inner side पे होते हैं they form the endoderm. तो एक चीज याद रखिएगा, out of the 3 layers the ectoderm and the endoderm they develop initially. ठीक है, पहले ectoderm और endoderm develop होती हैं, and धीरे धीरे बीच में फिर mesoderm layer जो है वो develop होती है. You know that all of these embryonic layers which are actually present in the embryo, they are involved in the production of new tissues as well as organs in the body. ठीक है, तो फीटस की बॉडी के अंदर जो भी नए ऑर्गन्स बनते हैं उन सभी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है वो इन तीनों लेयर से होना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म से. Okay student, one very important thing that is related with this inner cell mass, that this inner cell mass it contains very special type of cells, and these cells they are known as the stem cells. Okay, you have heard about the name of these cells so many times in different magazines. Okay, the research on stem cells is going on whenever some defective organs are there in the adult body. So what is the main thing related to these stem cells? That these stem cells they are capable of producing all the tissues and organs of your body. ठीक है, आपकी बॉडी के कोई भी सेल्स जो टिश्यूज होते हैं या ऑर्गन्स होते हैं, वो अगर लेटर स्टेजेस में भी आपकी बॉडी के अंदर जो है उनमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो ये स्टेम सेल्स जो हैं वो फिर से उनको रीजनरेट कर सकते हैं. तो इसलिए फीटस जो है उसमें इनर सेल मास में स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, and these stem cells they produce the different organs of the fetal body. New organs जो हैं, चाहे हार्ट बनने हैं, लिम्स बनने हैं, डिजिट्स बनने हैं, whatever is formed in the fetal
body that actually arise from this inner cell mass, which later differentiated to form the 3 cellular layers. Okay students, अब वो कहते हैं कि अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फीटस की बॉडी के अंदर या एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं. तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि आफ्टर 1 month ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, द हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज फॉर्म. जब 1 month हो जाता है तो उसके बाद एम्ब्रियो जो है उसका हार्ट जो है वो फॉर्म होने लग जाता है. ठीक है बेटे, और हार्ट जो है वो डेवलप हो गया है. हाउ यू नो दिस? तो जनरली डॉक्टर्स दे कैन हियर द हार्ट साउंड्स. ठीक है, दे कैन इजीली लिसन द हार्ट साउंड्स बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नोन एज स्टेथोस्कोप. Okay student, now at the end of the 2nd month of the pregnancy, when the 2nd month it completes, then generally the limbs as well as the digits develop. ठीक है बेटे, limbs के अंदर fore limbs and hind limbs आ जाएंगे, यानी arms and legs का development हो जाएगा. और digits का मतलब है कि hands में fingers का और feet में भी fingers का development हो जाएगा. Okay student, by the end of the 12th week, ठीक है, जब 12 हफ्ते हो जाते हैं, 12 वीक्स हो जाते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो सारे के सारे डेवलप होने लग जाते हैं. जेनाइटल ऑर्गन्स भी डेवलप होते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दे आल्सो गेट डेवलप्ड. लिम्स का फॉर्मेशन जो है वो भी लगभग कंप्लीट हो जाता है. एंड उसके बाद वो कहता है कि लेटर ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द फीटस इट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड बाय मदर. ठीक है, मदर की बॉडी जो है उसके अंदर महसूस होता है उसको कि फीटस जो है वो मूवमेंट्स करता है. द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ द हेयर्स ऑन द हेड. ठीक है, दे आल्सो इनिशिएट, दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th month ऑफ प्रेगनेंसी. तो 5th month में फीटस जो है उसके हेड्स पे हेयर्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है. एंड जब 24 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फीटस जो है उसकी बॉडी पे फाइन हेयर्स का डेवलपमेंट होता है, बिकॉज बिकम्स अंडर मैमल्स. सो हेयर्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स. ओके स्टूडेंट, आईलिड्स जो है, आईलैशेस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. तो इनिशियली द आईज ऑफ द फीटस इज क्लोज बट लेटर ऑन इट सेपरेट. ठीक है, तो आईलिड्स जो है वो सेपरेट होती हैं, आईलैशेस जो है वो फॉर्म हो जाते हैं. एंड 9th month कंप्लीट होने पर fetus जो है it develops into the fully developed fetus and now it is ready for the delivery. So sometimes what you see कि sometimes the development of the fetus is still going on or embryo is still going on and the delivery of the fetus it actually happens in 7th or 8th month. ठीक है बेटे, तो उस केस में because some of the important changes that are also occurring in the body of the fetus regarding the development, तो अगर इस तरह का प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है तो इस तरह के जो भी फीटस हैं, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स हैं, उनका लाइफ सेविंग यूनिट्स के अंदर रखा जाता है कुछ मंथ के लिए, जब तक कि उनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता. ठीक है, तो जनरली वो कहते हैं कि एक हेल्दी फीटस जो है, एक न्यू बॉर्न इन्फेंट जो है उसको 9 month लग जाती है. सो आफ्टर 9 month ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इट इज नाउ रेडी फॉर द डे. Okay student, so here I have shown you that how the fetus it is attached with the placenta. See, this is the placenta. The portion of the placenta that is attached with the fetus, it is known as, ठीक है, see your book it is also given, book में भी बताया हुआ, it is known as umbilical cord. ठीक है, तो umbilical cord है. और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम बुक में है, फिगर नंबर 3.12, the human fetus within the uterus. That is visible to you, page number 53. So here it is written plug of mucus in cervix. What is cervix? Cervix is the opening of the vagina. ठीक है, and vagina has a canal that is known as vaginal canal, which along with cervical canal form the birth canal. तो जहाँ पे वो कहते हैं कि if the fetus has to come out from the vagina, ठीक है, तो उस समय वो कहता है कि before the delivery of the fetus, initially, ठीक है, mucus it comes out through the cervix. ठीक है, तो there is a plug of mucus that is prior to the fetus, it comes out through the vagina. तो वहां पे वो कहता है कि वो म्यूकस जो है वो वेजाइना में पहले रिलीज होता है एंड देन उसके बाद फीटस जो है उसकी डिलीवरी होती है. ठीक है बेटे, कैविटी ऑफ द यूट्रस आपको नजर आ रही है डायग्राम में, जॉल्क सैक, ये सारी चीजें. तो दिस ऑल आर कंसर्न्ड विद न्यूट्रिशन ओनली. And one fluid is also there, you have heard its name so many times, amniotic fluid. ठीक है,
तो एमिनोटिक फ्लूइड जो है वहां पे प्रेजेंट होता है, और एमिनोटिक फ्लूइड जो है उससे सेक्स का डिटर्मिनेशन हो सकता है, बट नाउ डेज because some of the people they are using this for some false means, so now the sex determination tests they are prohibited in the hospitals, they are not done nowadays. Okay students, तो यहाँ पे देखिए आपको उसने बताया हुआ है अलग अलग स्टेजेस पे, ठीक है। ये तो मेंसुरल उसके आपको स्टेजेस बताई हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, 2 सेल 4 सेल 8 सेल, देन मोरुला स्टेजेस है, एंड उसके बाद गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट देखिए आपको कैसा नजर आता है। And when the blastocyst it attached itself with the wall of the uterus, ठीक है, by deeply embedded inside the uterine cells with the help of trophoblast layer, chronic villi is formed. Then how this blastocyst it implant itself, ठीक है। और उसके बाद देखिए इनिशिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शनल प्लासेंटा, फंक्शनल प्लासेंटा जो है वो डेवलप हो जाती है। देन ये प्लासेंटा जो है वो सर्व करने लग जाती है फीटस को, ठीक है। क्या क्या चीजें सर्व करनी है उसमें, ऑक्सीजन एंड अलोंग विद ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और फूड मटेरियल जो है नेसेसरी जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं गोज इनटू द बॉडी ऑफ द फीटस। एंड उसके बाद फीटस की बॉडी जो है इसमें से उसका यूरिन, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड इट कम्स। तो अब वो कहते हैं कि नाउ इम्प्लांटेशन इट इज कंप्लीट, ठीक है, pregnancy is also complete, the fetus is now fully developed, now it is the time for the delivery of the fetus. So you know that the human pregnancy it generally takes how many months, 9 month period, and that is actually the period of embryonic development, that's why this period is known as the gestation period. Okay student, now it is very much known that the fetus is fully developed inside the body of the mother. Now what happened for the expulsion of this fetus, ठीक है, certain vigorous contractions in the uterus muscles it takes place at the end of the pregnancy, so that the successful delivery as well as expulsion of the fetus can be done. So this period of delivery of the fetus or childbirth, it is known as parturition, ठीक है, as the name itself indicate, parturition means separation from the uterus. So who is going to separate from the uterus, that is the fully developed fetus. Now the signals for this parturition, ठीक है, they generally received by the brain, so a complex neuroendocrine mechanism is here involved, ठीक है बेटे। तो सारी चीजें जो है उससे रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं कि fetus is now fully developed inside the uterus. So regarding this the signals they are sent to your brain. तो ब्रेन को ये सिग्नल्स पहुंचते हैं, और ब्रेन जो है जैसे ही as soon as the brain it receives the signals from the fully developed fetus as well as the placenta of the fetus, ठीक है, fetus की जो placenta होती है और जो fully developed fetus होता है उसमें से सिग्नल्स ओरिजिनेट होती हैं, and these signals they finally received by your brain, and as soon as your brain received these signals it stimulates the maternal pituitary gland for the secretion of the hormone that is very important, and that hormone is known as the oxytocin, ठीक है बेटे। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इट इज रिलीज्ड बाय द मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, and this later induced mild uterine contractions, ठीक है। तो उससे mild uterine contractions जो है वो start हो जाती हैं, uterus muscles they start contracting, they get separated from each other. So you know that I have already told you that before the fetus what is present, a plug of mucus is present. So as soon as these uterine muscles they contract, जैसे ही ये uterine muscles contract होती हैं, first the busting of this mucus plug it takes place, and large amount of mucus it comes out through the vagina, ठीक है बेटे। और उसके बाद वो कहते हैं कि fetus जो है it rotate itself inside the body of the uterus, mother's body, mother's की body में uterus के अंदर fetus जो है वो जो है 360 डिग्री एंगल से जो है वो रोटेट करता है, and generally the head of the fetus it comes out first, ठीक है। तो जैसे जैसे वो कहते हैं कि the fetus it start moving inside the uterus for the purpose of delivery, the oxytocin hormone which is released by the maternal pituitary its secretion
it is enhances by the pituitary gland more and more, so that the mild uterine contractions it takes place. ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा uterine contractions जो है वो stronger होती जाती है, and in this way the fetus it rotates itself by the 360 degree inside the uterus, and the head of the fetus it comes first. See the different stages of parturition I have shown you here. So see what are present. So I have told you that in the cervix plug of mucus is there, and here this is the vaginal part, and this is the urethra, urinary bladder, rectum. Okay, placenta is there. तो placenta जो है वो fetus की body के साथ ही attached होती है. So initially the plug of the mucus it bursts, and the mucus it comes out through the vagina, and later on the fetus it start rotating itself. ठीक है, fetus जो है अपने आप को अंदर rotate करना शुरू कर देता है. It moves, it rotate itself with the 360 degree angle. So उसके बाद देखिए ruptured amniotic sac, मैंने आपको बताया यहाँ पे amniotic fluid भी present होता है fetus की body के आसपास, तो वो ruptured हो जाता है, mucus plug ruptured हो जाता है, it comes out, and then the fetus start moving, and first the head of the fetus it comes out. So in this way the strong uterine contractions, mild uterine contractions, it keeps on increasing, and oxytocin hormone it is at its peak level, and strong uterine contractions are there, and the fetus it comes out from the vaginal canal. Okay student, but the placenta and the remains they are left inside the body. So later on by more uterine contraction, this placenta it also comes out, because you know that it is deeply embedded inside the uterine cells. ठीक है, आपको पता है कि प्लासेंटा जो है वो क्रॉनिक विलाई से ही डेवलप हुई थी, एंड क्रॉनिक विलाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ट्रोफोब्लास्ट की, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस द ट्रोफोब्लास्ट इज डीपली embedded inside the uterus cells, so their separation it also takes place. तो देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि they are interdigitated with each other, and there is a strong bond between them. So when some of the portion of these chronic villi they get separated from the uterus cells or tissues, then a huge amount of bleeding should also be there, because they are later supplied by the blood vessels. So some of the blood vessels they get ruptured. तो जैसे ही वो कहता है कि chronic villi जो है वो separate होती है, तो उसके बाद जो है काफी एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग जो है वो रहेगी, और बचा हुआ जो पोर्शन है प्लासेंटा का along with the chronic villi, ठीक है, degenerating part of the chronic villi they also comes, and in this way the successful delivery of the fetus it takes place. ठीक है बेटे, now parturition is associated with another stage, and that is known as lactation. So if the successful delivery of the fetus, when it goes on, then what happens? You know that the mammary glands, one pair of mammary glands, they are present in the female body, and these mammary glands they are the important part of the female reproductive system. So as soon as the successful delivery of the fetus it takes place, now what happens? The mammary glands of the female, now it undergoes a differentiation. ठीक है बेटे, mammary glands जो हमें differentiation होने शुरू हो जाते हैं, and you know that alveoli are present. Okay, so जैसे ही वो कहते हैं कि pregnancy जो है वो complete होती है, mammary glands they get differentiated and they start producing milk towards the end of the pregnancy, and that process is known as lactation. ठीक है, तो these mammary glands they get activated, they start producing milk, and in this way the mother it start feeding the newborn infant. Okay, one very important thing regarding this milk is one special hormone that is here produced for the ejection of the milk from the female or the mammary glands, and that is known as prolactin hormone. ठीक है बेटे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो मेमोरी ग्लैंड्स में से मिल्क का इजेक्शन करवाता है. ओके, अब इनिशियली ठीक है, इनिशियल फ्यू डेज होते हैं लैक्टेशन पीरियड के, एंड दैट टाइम द मिल्क व्हिच इज समवट येलोइश इन कलर it comes out from the mammary glands of the mother, and that milk is known as a colostrum, and this milk it contains
larger amount of antibodies, and these antibodies, they are very much required for the efficient functioning of immune system of the newborn babies. ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉम जो है वो येलो कलर का मिल्क होता है जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज होती हैं, और ये कोलेस्ट्रॉम मिल्क जो है it is very much required for the better health of the babies. So breastfeeding is generally recommended by the doctors for the healthy upbringing of the babies. So sometimes when newborn infants they are delivered, they generally take birth, so most of the mothers they avoid breastfeeding. So that situation can be critical for the newborn infant because the colostrum milk that comes out from the mother's mammary gland in the initial days, this milk is rich in several antibodies that makes the immune system of the newborn infant very efficient. Okay बेटे, तो यहाँ पे बहुत सारी एंटीबॉडीज जो हैं वो चाइल्ड को मिलती हैं, और उससे जो चाइल्ड है उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए डॉक्टर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं कि मदर जो है उसको अपना मिल्क जो है वो जो बेबी है उसको देना चाहिए ताकि उसकी हेल्थी अपब्रिंगिंग जो है वो हो सके। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। एक चीज आपने याद रखनी है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहती थी कि पार्ट्यूरेशन के दौरान जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो ऑक्सीटोसिन होता है, पर जो सिग्नल्स जो हैं ब्रेन के पास जाते हैं, these signals they are actually generated by the fully developed fetus and the placenta. So kind of reflex action is generated. You must have to mention the name of that reflex action, that is fetal ejection reflex. ठीक है, ये नेम जब भी आपने लिखना है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान तो ये नेम आना चाहिए, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और आपने ये भी बताना है कि मैंने आपको बताया कि इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर इन द यूट्रस the fetus it undergoes movements with the angle of 360 degree. You must have to mention the role of the mucus plug. First the bursting of the mucus plug and the amniotic fluid it takes place, and later on the delivery of the fetus is there. Okay student, now the chapter is complete. I think it is very much clear to you. Hanji bete, now I am left with only one chapter. There are 4 chapters in your syllabus. Okay. Yes, children, I am on the NCERT questions, the back exercise. Before this, I want to ask, is there any doubt regarding any topic that you want to repeat again? Yes, बेटे, कोई भी डाउट किसी भी टॉपिक को लेकर जो आपको अच्छे से पता नहीं लगा है? This is my advice to all the students. Whenever the chapter it gets completed, you must have to go through the chapter on the same day so that the concept should be clear to you. Each and every line that is written in the NCERT book is very important. So wherever you find the important lines, to underline those lines, highlight it so that whenever you have to give the answer, तो आप easily उन चीजों को कोड कर सकते। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि the question is on parturition. अगर क्वेश्चन पार्ट्यूरेशन पे है, then you must have to tell first the definition of parturition. ठीक है, then you have to write that neuroendocrine mechanism is there. Then fetal ejection reflex. What is fetal ejection reflex? From where the signals they are generated. ये सारी चीजें आनी चाहिए। कुछ बच्चे जो है उनका ये क्वेश्चन होता है when they give their answers. ठीक है कि मैम you have cut our marks. So whenever I didn't find the points which I generally want you to write in your answer, if those points they are missing, तो ये obvious है कि तुम्हारे जो marks हैं वो कट जाएंगे। ठीक है बेटे, तो जो चीजें मैंने यहाँ पे यूज की हैं वो सारी उस क्वेश्चन के अंदर आनी चाहिए। If you have mentioned all the points regarding the process, this means you are going to get full marks. ठीक है, and I am not going to cut your marks at that situation. Okay, is there any problem? I think we have very less time to